HDFC, TCS and HCL tech breakout. Interesting. Good morning. Still time. Good morning, good morning, good morning, good morning. Interesting. Good morning. Expiry day. Neetu Goyal, you have not added expiry day also. Today happens to be Thursday. Good morning, Shashidhara. This is the fourth day we are opening again at 19,500. Let's see. Are we going to hold? Something very interesting happened with the Dow in the last
hour yesterday. So let's see, 19,500 will be interesting to watch. Not the place where I want to trade. Good morning, good morning, good morning. बहुत इंटरेस्टिंग है. उन्नीस 500 निकालेगा. बहुत इंटरेस्टिंग है.
There's a 1, 2, 3, 4, fifth test of 19,500. Let's see. Never pay attention to that kind of a spike heart. $44,900. Back to $44,900. Very good. What a lesson in patience. Timing solution लगाओ भाई. कुछ नहीं होगा. It will be very difficult to break out above this high. I should get selling pressure here. What do I expect by end of the day? It start coming down again. ऊपर है तो हम भी ऊपर रहेंगे. वाह, नाइस. लेट्स सी कितना देर टिकेगा इधर. What is there to describe?
Nothing. This happens always. Well, I mean, not always, but it happens most of the time. आएगा, शांति रखो, आएगा. ये देखो, मेरा ही ज्ञान मेरे को ही सुनाने वाले सब. अरे शांति रखो यार. जब आएगा इतना भयंकर आएगा. Has it done anything? Really nothing. रोज सुबह उठ के स्ट्रेस लेते हो आप लोग. भाग जाएगा, भाग जाएगा. अरे 4 दिन से नहीं भागा, क्यों भागेगा आज? शांति. हिसाब से अपना टॉप लग गया अपने को. वी विल हैव टू गो टू कंप्लीट द पैटर्न. वी विल हैव टू गो डाउन. दैट इज माय भरोसा. All small price movements in the larger scheme of things. इसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर आपको लगता है ऊपर भाग जाएगा तो आप बाई कर लो. आप न बाई भी करते हो न सेल करते हो. Thank you, Kavita Joshi. Just chill. It has done nothing. You should not, early in the morning, you should not look at those 1 minute charts and 5 minute charts and just look at the hourly and daily. What has it done? It is just battering its head against the high. करेगा क्या? इतना इजी होता तो 4 दिन नीचे नहीं आता. इतना सेलिंग नहीं आता उधर. ले लो. जल्दी मत करो. 15-20 मिनट, आधा घंटा दो इधर. लेट इट digest the early morning pressure and then decide. Manish Shah, you have just studied, you have not even studied it for one day. You have already started making predictions in live market. That's not the way to go about trading or understanding any principles of the market.
నమస్కారం ఈశ్వరయ్య గారు. నమస్కారం నమస్కారం. जाने दो नीचे और I'll show you S&P 500 hourly chart. And when everyone was feeling so bullish yesterday and everyone was buying, you guys know what is going to happen next? You can get a fair idea what is going to happen next. We have been talking about this pattern for such a long time. Simple है ना? तो कौन गिरेगा पहले? इंडिया गिरेगा कि S&P 500 गिरेगा? देखते हैं कौन गिरेगा, देखते हैं क्या करेगा. पहले बोला इन्वेस्टर्स आर अ स्टबर्न, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर अ स्टबर्न लॉट. इतना इजीली ट्रेंड चेंज नहीं देते कभी भी, एवरी टाइम.
It's always like this. It is always the same kind of sentiment. At lows, extreme bearishness; at highs, extreme bullishness. But then, when the market is in a continuation and going at taking out all-time highs and going up, that is also the time. But how do you determine which is the point of extreme market extremes? It is only the pattern which can tell you there. And सब लोग यही बोलेंगे गैप से खुला, गैप से खुला, गैप से खुला. That's happened over the last so many days. They were only looking at gaps, but on a daily chart there are no gaps. There are only inside bars continuously. Even right now, today is an inside bar. पूछ के बताऊंगा आशुतोष सिंह. By 10:30 everything will become very clear. मार्केट कुछ नहीं करता है. मार्केट नीचे ऊपर जाता है. फ्रस्ट्रेट आप होते हो. Market doesn't do anything. It is your choice whether you want to react or you want to just take it easy and relax. Market kya? Why do you blame the market? Market has done nothing. 10:30.
10:30 is our time today. People are watching DXY, people are watching Euro Rupee, people are watching the interest rate, people are watching inflation. अरे यूएस का इन्फ्लेशन 1.1% नीचे आया, तो इंडिया का इन्फ्लेशन तो उधर का उधर ही है. इनफैक्ट इट इज गॉन अ लिटिल हायर. सो व्हाट्स अ बिग डील? I'm not saying all this because my view is bearish. My view is bearish not because of all of this. My view is bearish because of the pattern. Let it do, let it do. Gone beyond previous high. By a couple of points. कितना था ये? 523. We are at 529. 530, 540. क्या कर रहा है? Nice, nice.
ही शांति, पैटर्न में कुछ फर्क नहीं पड़ा. मन तन पहारे दर शन हर 10 पॉइंट में 15 पॉइंट में थोड़ी व्यू बदलता है यार. नहीं बदला, व्यू नहीं बदलेगा ऐसा, इतना ही जी. I am short, and the minute this turns to the downside, I will add more. I will add more shots today. I am very confident.
I don't know what you remember correctly. I don't remember what I say. Yes, trade with Sarthak. Please exit your shorts. If you're feeling uncomfortable, please exit your shorts. Not just here. I have told you earlier also. If you're feeling uncomfortable, exit your shorts. अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एग्जिट कर दो भाई.
मोहनतेश, ऐसे ज्ञान के लिए ना मेरे को आप नहीं, ट्विटर काफी है. आई डोंट नीड वन मोर टू कम हियर एंड गिव मी ज्ञान कि मैंने बोला था. चिल. अरे आप सबको कितने दिन से बोल रहा हूँ, पहले 1 घंटे के एक्शन, पहले आधा घंटे का एक्शन पे मैं कोई डिसीजन नहीं लेता. These are all those spikes which happen every day. For the last 4 days, 3 days, I have not changed. What has happened today, just because it went about 10 points higher, doesn't mean I have to change. I am not going to change so fast. तो हर 15 मिनट में नाचना है तो फिर तो रोज नाचे. This is not the place to change the view. Let the pattern change. If I were to listen to you guys and do exactly what you guys have been doing for the last so many years, weeks, months, then I would have changed my view here about 20 times. 1, 2, 3 यहाँ नया लो लगाया था, फिर ये लो आया था इधर, मैं यहाँ चेंज, कितने चेंज चांसेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I would have to be changing my view every time. It doesn't work like that. Chill, relax. Don't get me hyper. Right now I am thinking. ऐसे चेंज नहीं होता है. ऐसे इधर भी चेंज करने के लिए बहुत ऑप्शंस थे. इसमें कुछ नहीं, absolutely nothing for me which is indicating I have to change. हाँ, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप निकल जाओ. डोंट वेट फॉर मी. दिस इज नॉट ट्रेडिंग एडवाइस फॉर यू हियर. आई एम जस्ट शोइंग व्हाट आई एम डूइंग. पोजीशन आप लोग बड़ा बड़ा कर देते हो, फिर टेंशन आ जाता है आपको. You have to keep the position size according to your.
I'll tell you what mistake. 10:30, Harneet. 10:30. I'll tell you what mistake those who are continuously getting afraid are doing. The mistake is you have taken the position thinking that ये 18,600 बोला तो मैं 100 पॉइंट भी मिला तो निकल जाऊंगा. So you have taken a large position. For me it is a 4,000 point 3,000 point trade. So मेरा position is much lighter than yours in terms of percentage of my portfolio. Which is why you guys are getting tense and I am just sitting relaxed. कर ले जो करना है तो कहीं नहीं जा सकता. So that is the difference between the two of us. So if you are feeling uncomfortable, understand your position is way too large for your ability. Constantly asking where will you change your view, where will you change your view will not help you. Because if you are uncomfortable, market आपका stop loss खा के ही जाएगा. Who's challenging anyone's financial ability? I am not challenging. I am only talking about the behavior that is possible. भूल गया मैं.
मानत पद हरिदर हेलो. इसीलिए बोलता हूँ ऑप्शंस को हाथ मत लगाना, ऑप्शंस को हाथ मत लगाना, और वो भी सेल करना. यू शुड नॉट सेल ऑप्शंस, वो भी सेल करना है ऑप्शंस. बाय नहीं, बायर नहीं सेलर. ऑप्शंस ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम, नो, विच इज व्हाई आई डोंट ट्रेड ऑप्शंस एट ऑल. I am trying to say you should never sell options without holding the underlying. If you have the underlying, then you can, if it goes wrong, you have a hedge. Options are basically a hedging instrument. Options are not a trading instrument. अब आपने इधर काट दिया, अब उसके बाद में सपोज पोजीशन काट दिया. Okay, by evening it comes again back by for 19,360. What will you do? Apart from regret, there is nothing there. So that is the whole problem. Huh? No. Underlying me. Huh? Okay. For the last 4 days, Nifty was stuck at 19,500. आपका 19,500 का ऑप्शन का प्राइस क्या हुआ? डिके हुआ ना.
ठीक है, मेरे लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. For me, it is only a 50 point rally from my position. Because I'm only in the, whereas in your case, because you are a seller, okay, DK, thoda it worked in your favor. If you are a buyer of an option, तो टाइम डिके तो हो ही गया. आज इतना ऊपर भी आया तो आपको इमेजिन someone who's bought 19,500 calls, let's say on 5th of July. His position is still making a loss today. Even though the market is up 19,500 पे, अगर for example somebody has bought a call option, call on 5th of July, when market was trading at 378. It was a out of the money option. वो आज तक वेट किया, आज इन द मनी हुआ वो, फिर भी जितना वो प्रीमियम पे किया ना, वो प्रीमियम नहीं आ रहा है आज. करेक्ट है? क्यों? अब अगर वही 19,300 पे कॉल फ्यूचर खरीद के बैठता, इतना दिन जाने के बाद भी उसका पैसा तो आ रहा है. ऑप्शन इज अ डबल लेवरेज्ड प्रोडक्ट. यू आर लेवरेजिंग, इट इज मल्टीपल लेवरेजेस. विच इज द प्रॉब्लम विद, कितने बार बोलता हूँ, लोग नहीं समझते. सर मैं डीके खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, but ultimately you will end up losing. And option selling, you will, most of the time it is very difficult if you don't know what, if you don't hold the underlying. होल्ड है, चुपचाप बैठना. कब का है? जुलाई एक्सपायरी है ना. जो शांति से बैठता चुपचाप. फ्यूचर शॉर्ट है, हाँ तो ठीक है ना. फ्यूचर अच्छा, तो पुट भी बेचा है, नहीं पुट कॉल बेचा है, प्लस पुट फ्यूचर शॉर्ट है, तो फिर हेज किधर है? $19,700 के कॉल बाय है और नीचे के कॉल बेचा. समझना पड़ेगा यार डिटेल में. अच्छा सिंपल, ओके ठीक है. Then hold. I will say hold. It is not closing around this price by this month end. नहीं टिकेगा. It will not hold this price. It cannot hold this value. And today also, wherever it turns, I have a time at 10:30. Wherever it turns, it is going to come back like a ton of bricks. Today itself, by evening. Abhi the first trend change time I have is 10:30. And never take a decision in the first half an hour of the market. First half an hour is always the retailers. First half an hour expression of the market is always the retail. It is never the institutional smart money which is doing. बस आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा on how to read the market. What? Retail can only bring this kind of movement. 3 दिन से तो 150 पॉइंट खुल रहा है ऊपर. Look at the last 3 days. What has the market done? Every day it has opened 140, 130, 140 points. Okay. Now I'll give you the psychology. What happened? What happens is, तीनों दिन से खुला, ऊपर खुला नीचे आया, ऊपर खुला नीचे आया, ऊपर खुला नीचे आया. आज पब्लिक क्या किया? ऊपर खुला, अरे वापस नीचे आएगा, पिछले का स्टॉप हाई पे स्टॉप लॉस लगा दे और बेच दे. अरे बस दिस मार्केट, वो स्टॉप लॉस खा लिया, वो स्टॉप लॉस खा गया और उनका पोजीशन खत्म होने तक तो ऊपर जाएगा ना एक बार. ऊपर जाने और रिटेल को एग्जिट करवा के जो होना है बाद में होगा. The retail is the one which gets stuck in all of that. See, the market is constantly playing games with you. So you have to be doubly sure what you are doing. If you're not sure, भाई मेरे तकलीफ होगा. निमाए.
Plus, always understand one thing. You should analyze the bar, everyday bar. Every day, the bar on the chart there's a bar which is formed. No. Okay. Now understand. We all look at closing. You understand? Close is very important. Close is very important. बोलता है. Why do we look at the closing? Why? हाँ, close by the institutions क्यों बोलते हैं? See, the close always represents the net result of that trading session. Okay, so if you understand, if you have checked the chart in the last 4 trading sessions, the close has been towards the lows. Irrespective of what happened during the day, the close has been towards the lows. Which means someone has been selling at 500 के वहां से लेकर आके इतना बड़ा बड़ा डीप क्लोजेस दिया है. आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशन आप 20 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर लेकर गया तो छोड़ेगा वो? हाँ, तो फिर वो बाय एंड ऑफ द डे क्या करेगा? He just need to bring it down towards the low. That's it. You have given him a better opportunity to sell at a higher price. And it has been done on phenomenal volumes. Don't go by the noise. Noise in the market was yesterday, it came down because of the HDFC Bank issue. ऐसा नहीं होता है. That is an excuse given to you. Don't go by those excuses. एंड मार्केट कितना 460 से 560 का है ना, 100 पॉइंट गया ना, 100 पॉइंट खत्म करने इसको 5 मिनट चाहिए मान निफ्टी को. द मिनट इट द ट्रेंड टर्न्स इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू गो डाउन. It went up 700 points in 5 days. Did you realize that? From 18,600 to 19,500, 900 points in 5 days. So why can't it come down in 5 days? सर 500 पॉइंट गिरेगा? अरे जब गिरता है तो गिरता है ना. We are at the fag end of the pattern. तो यहाँ पे टर्न होने के लिए टाइम तो लेगा ना थोड़ा. आप पहले से स्प्रेड एस्टेब्लिश करके बैठे हो, इसीलिए आपको टेंशन हो रहा है. अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू गेट स्ट्रेस्ड हियर. I'm also short, but I'm short only in the last week 10 days, which is not giving me any stress. Plus, you have exposed yourself much larger than what your ability is. You have exposed yourself much larger than what your ability is. Which is what is giving you the stress. चिल मार्केट बंद कर, जाके बे बोला 15 दिन छोड़ दे मार्केट. ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा. रिलैक्स, चिल. अरे बॉस मेरे को बोलो, मेरे शॉर्ट पोजीशन है, अभी चले गोवा. अभी अब भी चलो, मैं बंद करके चलता हूँ. वही से करते हैं लाइव ट्रेडिंग. क्या है यार. It will only change on certain designated days. Other days there cannot be a trend change. There's a cluster of them here. Which is why it is stuck in that few points plus or minus. There's a cluster of these dates from 5th to 16th, 17th. Which is why it is stuck in those days. मैं उस दिन बोला था मार्केट के बाद में कॉल कर कुछ दिखाता हूँ. Which would have given you the confidence, हाँ शांति से बैठ सकते हैं. But you didn't. Hello.
चलो मार्केट के बाद में कॉल करना, आई विल शो यू समथिंग. हाँ चालू है ना, मैं उधर बात कर रहा हूँ. लाइव ट्रेडिंग करना क्या है, शांति से बैठे. लेट द मार्केट डू व्हाट इट वांट्स टू डू. 10:30 देखते हैं ना, जल्दी क्या है. 5, हाँ तो देखते हैं ना, 5-10 आगे पीछे. 10:30 तक देखते हैं ना. सिर्फ 10:30 इज नॉट अ लाइन सेट इन स्टोन. Time is 10:30 is not a there is not a split second timing. Around 10:30 is what I will watch. क्या कर रहा है? Then decide what it will do for the rest of the day. Let's see how it will not turn. Then I'll recalculate based on the chart the market is doing. So there's a method in this madness also. So if it does not do, then we have a next time frame. When you have a next time frame, okay. But depending on the pattern in which it unfolds at 10:30, then I will see. No, I will not book my loss. My trade is based on the daily chart. Nothing has changed in the daily chart. It's just about 30 points of the 40 points. 521, 556. 30 points away. 30 पॉइंट है भाई. हाँ तो क्या हुआ. 30 पॉइंट भी नहीं रोक सकते तो फिर कैसा ट्रेडिंग. क्या कम अगेन. हाँ, बैंक निफ्टी is far away from its daily high. हाँ, हाँ, so हाँ, हाँ. See, I will ask you other question. We are at 19,600 now. 19,560, 19,600. Okay. Where do you see Nifty from here? बराबर है ना. हाँ बराबर है ना. Next question. Suppose it rallies off from here. Okay. It'll have to go to 40,000. वो आप बोलेगे 25 पे रुकेगा, 22 पे रुकेगा, वो हमारा पैटर्न नहीं जमता है. हाँ फिर तो 40,000 का टारगेट आता है. क्या 40,000 लगा सकता है? अरे ऐसा नहीं होता है बस. तो अब वो तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर मेरे को भी वही बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा ना. 6 दिन में 8% जा सकता है, तो 6 दिन में 20% नीचे भी आ सकता है. अरे बस, that logic has to be given to the other person also. That won't work. Right now, lot of people are feeling bullish. Aggressively bullish. Plus, there is a lot of previous stop losses of the last 4 days cut off today. हाँ, बैंड बजी ना अभी. आज बैंड बजी ना. हाँ, सब के कटे. तो इसीलिए तो एक बार के लिए अगर वो कटा, तो एक बार के लिए तो थोड़ी देर तक तो ऊपर आएगा. समझे. तो थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा. आर यू गोइंग टू, मैं जो लाइव ट्रेडिंग में रोज सुना रहा हूं, आर यू गोइंग टू रिएक्ट और आर यू गोइंग टू बी प्रोएक्टिव? Are you going to watch the pattern, understand what it is doing and take your action, or are you going to just react? अरे भाग गया ये करना है. Which step you are going to take? That is your choice. Correct.
Right now you are only reacting because you are under extreme stress. ठीक है ना. अभी 10 करोड़ 15 करोड़ जा रहा है, कितना जा रहा है पता नहीं है. अगर 10 करोड़ जा रहा है, 10 का 10.5 होगा ना. रिएक्शन में उल्टा ज्यादा जाएगा. अगर पोजीशन काटना भी है, यू विल हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस. It will retrace somewhere. That is the point where you will want to take. You will not want to just exit wherever. Or bhag gaya. Respond to it with a calm, well thought out manner. Otherwise, you'll always regret your actions. नहीं बॉस, आप लोगों को गाली दूं मैं क्या दूं. RSI above 70 does not give a guarantee that the market will come down. हाँ, वो सस्टेन ही करता है. कितने दिन से सस्टेन कर रहा है. 1 सेकेंड. RSI कहाँ है. अपना RSI लगाते ही नहीं ना. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. RSI 1 second. RSI is above the upper band on the daily. Weekly is also above the upper band. It has just come about. Monthly is way below. Hello? RSI is at 67, हाँ. तो बॉस RSI में इतना क्लासिक डाइवर्जेंस है ना मंथली में. हाँ, तो शांति रखो ना. उसको टाइम लगेगा RSI को इफेक्ट दिखाने में. दैट टू मंथली RSI. Look at the previous times RSI. Look at the previous times. Not just don't go by the theory. The theory is only just an aid for you. Look at the previous time. 2020 RSI was hitting 4 times. बराबर है. उसके बाद में नीचे आया. Even now there is a divergence in the RSI. Nifty has been making higher highs and RSI is coming lower. And what does the RSI do? RSI is just tracking the close. The number of closes in the last 14 periods. That's it. That is all that the RSI is doing. So if the closes are higher, it will show that the RSI is high. If the closes are lower, it will show the RSI is low. So what has changed there? Nothing. Just because a few closes are higher doesn't make the market extremely strong. Just because a few closes are lower doesn't make the market extremely weak. There's more to the RSI than what you're studying. This is right now what the RSI is doing is what I would call the classic divergence signal. There is a top in January 2021, October 21. Then it had made a lower RSI 67.46 banaya tha when the second high was done, which was in November. Now you are making a 67.76, which is the two intermediate ones, two previous high and current high के बीच वाला lower है. And the current market is higher than the intermediate one also. So this is the classic divergence signal. अब इसको घूमने देना पड़ेगा आपको. तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा. अब मंथली RSI देख के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. मंथली RSI is just for a view. हाँ, अच्छा. वीकली में भी क्या किया? क्लासिक डाइवर्जेंस है फ्रॉम 2021. September 21 it was a high, then November 22 it was the low, I mean lower high, then now it is a higher high than the lower high. So okay, now you got to wait for it to turn. This is classic. The in between वाला नीचे है दोनों के बीच, दोनों हाइस के बीच में. हाँ, this is the classic divergence.
पब्लिक क्या करता है, एक दिखते ही टर्न होते ही आरएसआई हाई होगा. आरएसआई कैन रिमेन हाई. When does the RSI became? Now that it has entered above 70 on the weekly one, it is what just said. Now if it turns, it is a very dangerous signal. डेली में आओ, तो आप डिटेल में सीखो, ऐसा नहीं चलता है. Okay, just don't go by what you learned in the books and expect to make money from there. You got to be much more deeper than the books to make money. क्योंकि आप जो देख रहे हो वो सब देख रहा है. You think people don't see RSI? If the whole world sees, these days it has become very easy. No, anybody with a computer can plot the RSI in a second. The whole world is seeing. So what is it? Now things have become subtler and more deeper. You got to go be one step ahead from what the world is seeing. Not even one step. I would say you have got to be 10 steps ahead. You see, earlier the patterns used to be so perfect. Now the pattern itself get invalidated and then it will prove you that it is right. Elite wave वाला बोलता है करेक्ट, एग्जैक्टली दिख रहा है. Why is it down? Someone is selling, was continuously selling. वो कोई देख नहीं रहा है. People are because the retail अब हो गया 10:30, 10:25 को टॉप बना मार्केट का, स्टार्टेड टर्निंग. कितना एग्जैक्ट वन मिनट चार्ट में कितना बना? 10:28 को बना. देखते हैं 1 घंटे बाद में. कॉल मी अप एट 11:30. Let's see where Nifty will be. ठीक है, चलो. Sorry everyone that I had to take that call. Had to take that call. He is losing almost 10 crores.
ended up selling a whole lot of. ऐसे गलतियां करते रहते हैं लोग, बोलने के बाद भी करते हैं, कभी कभी करना पड़ता है. Wow, that is fast. The next one is at 11:45, 10:45 or 11:45. भी क्या है? 11:05. Oh. Yeah. I have some clients who will have a M2M of 1.5 to 2 CR every day. So it will be more or less similar. It will not be much different. Yes, of course, applying TA these days is much more difficult. It's not easy. You have to, people expect to read in the book and expect the whatever is written in the book to happen exactly as it is, which is where most of the people fail. Because you have to understand that this earlier technical analysis was very difficult because there used to be no charts, or people did not even have access to the charts. Now charts are available. Even when the charts came way back in 2005, 2004, charting was not free. You had to buy a charting software, you had to buy or do all of that. Now charting software has become very cheap. And you can buy and you can get the data. It is almost, it's free, practically free. So everyone is able to chart. So now the situation is, will the patterns work? Yes, the patterns will work. Will these RSI and other things work? Yes, they will work. But you got to become more and more creative, because these institutions are also trading on that, and they know where the buys and where the stop losses will be, what are the ideal points and all. So they are also, there is a constant struggle or fight in the market going on about between all the traders. So it has become a little difficult to fathom, a little difficult to trade the market these days. One thing that the institutions don't really understand or pay attention to is the time cycles, because time cycles are not easy. They are very difficult to apply, and they are very difficult to work with. So even if you know the time, sometimes the market will keep frustrating you or keep hovering and getting you all worked up, like what is happening right now. Sometimes it does. So there have been some changes in the last 10 years. So you have to keep yourself options are a hedging instrument.
They are a derivative of a derivative of a derivative. They are extremely sensitive to time and price both. And third one is investor sentiment, which is what reflects as volatility. So do not use options for trading at all. That is my first advice to anyone. Uske baad mein bhi, if someone says, I want to trade options, like that friend of mine with whom I was on the call, नहीं ऑप्शंस ही करना है, ऑप्शंस में पैसा बनता है, योर फ्यूनरल. पूरा साल भर हर महीना 50-50 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़ कमाया, एक ही झटके में 10 करोड़ ले गया. पूरा साल का जितना प्रॉफिट था एक ही झटके में कंप्लीटली गॉन. नाउ ही इज स्टेयरिंग एट अ बिग लॉस. Options are not a trading instrument. That's it. Period. If people still want to trade options, it is their funeral. Which is why I say, if you are trading options, don't even ask me what to do. Advice भी नहीं दे सकते आपको. सजेशन भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं. ऑप्शंस करना हो तो you are gambling, pure gambling, nothing else. I have seen a lot of people lose heavy amounts of money trading options. Best is stocks, second best is futures. आशुतोष कुमार 15K बना लो, महीने का बहुत हो गया.
Let's see what Nifty is going to do. $15K मंथली बना लो तो पूरे साल का कितना हो जाता है? That's 60% per annum. Now compound it over 10 years, see what happens. और हर साल उसको कंपाउंड करोगे तो कितना होगा 10 साल में? एक्सेल लगाते हैं। हाँ 300,000 एक साल में बनता है 180. It becomes into 1.6. Is equal to this into 1.6 is equal to this. अब 4, 5, 6, 7, 8, 10. It becomes 3 crore 29 lakhs. That's all at 5%. Why do you want to do more than that? ये करना is very relaxed, easily possible. You don't have to do much. With 5% every month. Is it possible? लाख रुपए पे 5,000 रुपए कमाना? हाँ आराम से. That is possible. बट इधर लाख रुपए पे लाख रुपए कमाना है हर दूसरे दिन. पांच % लाख रुपए पे 5,000 रुपए नहीं कमा सकते डे मंथली. मंथ एक महीने में पेशेंटली बैठना पड़ेगा.
पेशेंटली बैठना पड़ेगा, अपना पैटर्न आएगा तभी ट्रेड करूंगा. It is possible to do 0.5% in a day also. 0.5%. मतलब लाख रुपए पे 500 रुपए कमाना. पर इधर लाख रुपए पे 500 रुपए कौन कमाना चाहता है? पूछो ट्रेडर को कितना कमाना चाहते हैं. सर मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे को 5 करोड़ रुपए बनाना है. अच्छा, 2 लाख रुपए से 5 करोड़ बनाना है, 20 साल का व्यू है, तो ठीक है, समझ में भी आता है. बनाना एक ही साल में है. क्यों? क्योंकि किसी का 70 लाख का MTM देखा है. सो इट हैज बिकम अ कंपटीशन. मार्केट इज नॉट अ कंपटीशन. मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू मेक योर गोल्स एंड यू ट्राई टू अचीव योर गोल्स. अब पूछो कितने लोग इधर जितने भी पीछे है, ऑन दे विल नॉट गिव एन ऑनेस्ट आंसर, बट ऑल द पीपल आस्किंग सर वेयर विल यू चेंज योर व्यू, वेयर विल यू डू दिस, वेयर विल यू चेंज योर, ये सवाल पूछने वाले के सब लोग, इनका पोजीशन क्या है एंड व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन? आस्क देम. विल एनीवन गिव ऑनेस्ट आंसर? पोर्टफोलियो कितना था, एक्सपोजर कितना लिया है? Yes, you can deploy 30 lakh rupees, no problem at all. Just see the behavior. You have been here. If you have been here, कंपाउंडिंग नहीं होता, द मोमेंट साइज इंक्रीज हो जाता है, माइंड स्टॉप वर्किंग. दैट इज बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द साइज विदाउट पेइंग अटेंशन टू द पोर्टफोलियो. यू आर जस्ट इंक्रीजिंग अ साइज ब्लाइंडली. यू डोंट हैव अ मेथड, यू डोंट हैव अ सिस्टम. थिंक अबाउट इट. नहीं आता है तो कभी आ जाना सीखने के लिए, सिखा देता हूं. हाँ, highly leveraged position using options much larger than your portfolio, you are losing more than 10 to 15% of your portfolio, which is why the stress. मेरा जितना पोजीशन है, अगर ये निफ्टी 19,800 भी जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो का 3% जाता है. विच इज वाई आई एम लाइक, हाँ कर लेना, देखते हैं. एग्जैक्टली. इन द मॉर्निंग व्हेन आई सेड 10:30 का टाइम है, 10:30 तक देखते हैं ना, 10:30 तक पीपल वर गेटिंग वर्कड अप. व्हाई वर दे गेटिंग वर्कड अप? बिकॉज देयर पोजीशन वाज ह्यूज एंड दे वर लूजिंग मनी. It doesn't need, I don't need to even ask them how much. Someone was, Pawan Gandharv, you were very angry. Don't question people's financial ability. It is not financial ability. It is the exposure you have based on the percentage of your portfolio, which is why you get stressed up. If you're talking of financial ability, Pawan Gandharv, I have clients who send me a private jet to come whenever I reach New York. No, they are not. They are friends. They are not.
घर की मुर्गी दाल बराबर ना. एंड यहाँ पे साहब एवरीवन इज एन एक्सपर्ट ऑफ द मार्केट हियर. क्या है, क्यों सुनने का. अपन तेजी में बना है ना पैसा, क्यों सुनने का इसको. पिछले 1.5 साल से तो तकलीफ हो रहा है क्योंकि तेजी में सिर्फ बना है पैसा. मंदी में क्या करोगे, साइडवेज में क्या करोगे. तेजी में गधा भी पैसा बनाता है. 2020 से लेके 2021 तक सब हर एक आदमी पैसा बनाया. किसने नहीं बनाया. कुछ नहीं किया, डीमैट अकाउंट में स्टॉक है तो पैसा बन रहा है. वो ऑटोमेटिक बन रहा है. देयर नो स्किल वाज रिक्वायर्ड देयर. द स्किल वाज स्टार्टेड ओनली आफ्टर 2021 October. That is the time most of the people lost money. So because they made money, ये स्टेज में पैसा बनाना was not a big deal. हर घर गधा पैसा बना रहा था इधर. पैसा बनाना इधर इंपॉर्टेंट था और स्किल वाज रिक्वायर्ड हियर. यहाँ पे नहीं बना ना. मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट मनी और दे स्टक विथ पोजीशंस इन विच दे आर लूजिंग ह्यूज मनी. Stocks have not moved. Some stocks have stopped their rally completely. They are stuck. They have bought. They have loaded up on stocks which are not performing. In this rally, very few stocks will move. All those things are stuck. एग्जैक्टली. अभी एक बात बोलो. ये 3 वेव पैटर्न है, ये 3 वेव पैटर्न है, ये 3 वेव पैटर्न है. ये मार्केट कहीं नहीं जा सकता. इधर दिस इज एन एंडिंग डायगोनल और इट्स एन एक्सपेंडेड फ्लैट. इफ इट इज एन एंडिंग डायगोनल इट हैज टू collapse completely. If it is a expanded flat, it has to come at least till here. In both cases, it has to come here. Does this look like an impulse? After this, does this look like an impulse from this point of? It doesn't look like an impulse. So when this doesn't look like an impulse, whatever happens, यहाँ तक तो doomed to destruction तो है ही. तो भले ही इधर एक दिन ऊपर चला गया, अल्टीमेटली पैटर्न जहां पे एंड होता है. चलो भाई, हम 4 दिन पहले बोल दिए ट्रेंड चेंज हुआ क्या. मार्केट गया हो कितना ऊपर. हाँ, ये इधर बोला वो गलती है, बड़ा गलती है, विच आई डू एक्सेप्ट. बट यहां आने के बाद में, कैलकुलेशन के बाद में कुछ नहीं हुआ है. Absolutely nothing has gone wrong. Market is up just by 50 points. Lot of things can happen from here till 3:30. What is the hurry? Have we made these kind of tops? Yes, we have made. Have we made these kind of bottoms? Yes, we have made. इधर भी वही था. 1, 2, 3, 4 days. If I'd given a date on say 27 September, क्या होता. अब बोलते 29, 30th, 3rd, 4th, 6th, 5th तक. अरे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है. See here, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. नेक्स्ट डे ऊपर जाके फिर वापस इधर आके फिर गया ना. So these are all, market behaves like this. See this here, same behavior. 1, 2, 3, 4 days. नेक्स्ट डे ऊपर ही खुला और ऊपर गया और नीचे आया. ऐसे बहुत बार हुआ है. इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड. 5 मूविंग एवरेज वैल्यू 513.34. अब ये मार्केट नीचे आएगा, किसी का हिम्मत नहीं रहेगा.
बेचने का। The market tests even the best of analysts, because this is what, like I was talking on the telephone, in this stage here, when market 3 दिन बनाया, आज public are also watching the pattern. They are also watching. अरे तीनों दिन ऊपर खुल के नीचे आ रहा है, ऊपर खुल के नीचे आ रहा है, ऊपर। आज भी वही होगा, 500 पे खुलेगा, 526 का स्टॉप लॉस लगा दो इधर का और बेच दो। तो उनको ट्रैप करने के लिए जाएगा ही एक बार। आज नहीं गया तो कल जाता, वो तो ट्रैप एस्टेब्लिश था। वेट टिल द मार्केट फिनिशेस। सो विच इज व्हाई आई केप्ट सेइंग 10:30 तक टाइम तो दो। At all stages, there are people willing to sell, there are people willing to buy. So don't say market people are only looking to buy or only looking to sell. There, see, Harth, you make a rule, if it goes up 9 days, it has to correct 5 days. जिस दिन आपने रूल बनाया ना, उसके नेक्स्ट डे मार्केट उसको, वो रूल को तोड़ता है। अपना ये टाइम भी आया। Now, ideally speaking, ये टाइम पे it should go down faster. Let's see what it does. Just by saying ideally speaking, ideally ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है ना आइडियल पैटर्न मार्केट करे। आइडियल करता तो सबके लिए परफेक्ट होता, हर आदमी पैसा बनाता। तो वो मार्केट विल नेवर बी आइडियल, मार्केट विल ऑलवेज बी थ्रोइंग अ कर्व्ड बॉल एट यू। गूगली फेंकेगा ही हर बार, आपको हर बार उससे बच के ही निकलना पड़ेगा। गूगली आएगा ही। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच योर faith is there, how much deep you are analyzing, how much you are thinking, what you are doing. All of that makes it. There is no easy system here. आपको मार्केट को करने के लिए उसका टाइम भी देना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, एक्चुअली में क्या टेस्ट किया, डेली चार्ट लगा के देखो क्या टेस्ट किया, टाइम छोड़ के और क्या टेस्ट किया। इसमें कोई अब इधर बोले दिस हैज टू बी द टॉप, ये एक दिन ये ऊपर आया 10 पॉइंट 20 पॉइंट, डज इट व्हेन योर व्यू इज सो बिग? माय व्यू इज इट हैज टू हिट हियर। इतना इसमें वो 50 पॉइंट का कोई वैल्यू है क्या? अगर आप टिके रहो जनवरी तक, मैं इधर लाइव ट्रेडिंग पे मैं तो टिका रहूंगा। ये दिखाऊंगा ही 15,100, 15,200। And I'm not deleting any of the live sessions there. They will always be there. I don't delete tweets, I don't delete videos, I don't delete forecast videos in ever, even if I'm wrong. Rahul Yadav, if your pattern study is correct, you will not have to keep a stop ever. For that you have to, to get that feeling, ये और कुछ नहीं कर सकता. This is the only alternative you have. You have to spend a lot of time studying. जितना स्टडी टाइम स्टडी पे वेस्ट करोगे और स्टडी पे लगाओगे, उतना कंफर्टेबल मार्केट में बैठोगे. क्यों चाहिए मेरा ध्रुव देसाई मेरा स्टॉप लॉस?
क्यों चाहिए आपको? सब पूछते, होल कंट्री आस्क वेयर इज योर स्टॉप लॉस. आई नेवर रिवील व्हाट इज माय स्टॉप लॉस. 1 to 1 2 कैसे हो सकता है? कहां से 1 to 1 2 होगा? 1 to 1 2 कहां से होगा? हु इज द वन हु इज गोइंग? डोंट टेल मी रोहित श्रीवास्तव इज गोइंग. 1 to 1 2 कहां से होगा? ये 1 to 1 2 होगा? ये 1 to 1 2 होगा? कैसा होगा? You have to create a small position. You don't create big positions. Let us say, let's go to the daily chart. Let us say your target is here. कितना पॉइंट है? 4000 पॉइंट. ठीक है, 4000 पॉइंट मतलब आपको चाहिए मिलेगा ऑन 1 निफ्टी 2 लाख रुपीस. ओके, सो 100 फ्यूचर बेच के बैठोगे यहां से, तो यहां तक आपको 4 लाख रुपए मिलेगा. ठीक है, तो 100 करोगे तो 100 पे, इवन इफ यू पुट, if you want a 1:4 trade, so you are losing at least about 4 लाख रुपए मिलेगा. तो 60,000 का स्टॉप लॉस लगाओगे तो 100 बेचोगे तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इधर? Just 2 lots if you sell, and you are putting, you have a stop loss value of 60,000. So what is your stop loss? How many points of stop loss can you have if 60,000 है तो? हो गया? अब समझ में आया why I am relaxed and you are getting worked up? आप ट्रेड करोगे 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस से? नहीं रखते हो ना?
इंट्राडे ट्रेड में भी स्टॉप लॉस छोटा, लार्ज ट्रेड में भी स्टॉप लॉस छोटा। अरे ऐसा कैसा चलता है? Now, now the rupee has done everything that it can do. अब खत्म हुआ। Now it should not do much. I will say 8160 नहीं तोड़ना चाहिए। अब यहाँ से 8157, 8160, okay, 8150 should be the place. Now is the time that Nifty is ready because it has done A, B, C, D, E, F, G, H, I or A, B, C, D, A, B, C, D, E. अब ये दोनों अब निफ्टी के साथ में जाके ये मर्ज होगा, ये ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा। Wrong places see the wrong things. Why? रिकॉर्डिंग देख लेना, सेम चीज नहीं बोल सकते। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्पीक विदाउट एनी स्क्रिप्ट हियर, तो half the things I don't even remember what I'm saying. I'm only saying whatever comes to my mind. There are a lot of women here, otherwise I would have used some language, Mihir Rathod. इतना पूरा सुनने के बाद वापस बैंक निफ्टी कमिंग टू हेल्प निफ्टी, अरे क्या है?
क्या ब्रेकआउट है निफ्टी का यार. क्या ब्रेकआउट है. व्हाट अ लवली ब्रेकआउट. Breakout is just by 20 points. Very nice. 0.1%. Great breakout. कुछ बोला ही नहीं तो कहाँ से वॉइस आएगा.
You keep thinking. No problem at all. That's what I'm expecting, Ashish Gandhi. तो मेरे को इमोशनल वैलिडेशन कौन देगा? शिव पांडा। मैं भी तो इंसान हूं। आपने तो इमोशनल वैलिडेशन ढूंढ लिया, हमारे को कौन देगा वो इमोशनल वैलिडेशन? $11.55. वो कोई साथी नहीं चाहिए। अगर ये लाइव ट्रेडिंग लाइव सेशन स्ट्रीम नहीं रखा होता तो मस्त शट डाउन करता, नेटफ्लिक्स ओपन करता और नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखता बैठता। Who's bothered about all of this? कुछ नहीं करेगा। कर लो जो कर रहा है कर लो। हम तो सो गए थे भाई, हम सुबह उठ के देखे। See, true breakouts are never like this. अगस्त 19 तक ये 500 लोग नहीं हुआ तो मैं तो बंद कर दूंगा। ये नंबर 500 होना चाहिए जो आपको इधर दिख रहा है। ये 500 नहीं हुआ तो बंद। सब इस पे टिका हुआ है। That means only 120, 130 people are interested. ठीक है।
Hey. It is fine. What are you doing? Why this? हो गया खत्म. Third day of inside bars. Wow. Okay. ITC Reliance Doji inside bar. Okay. ITC all inside bars. Shit. $556, $557. So we are like half a point. 1 point. I don't look at the moon cycle at all. Very good, very good. अच्छा है. Only question is, are we going to come below this point today? Or at least till 19450? 100 point तो निकाल ही सकते. Kranti Subhash, attend Elite Wave training session or read the Elite Wave book?
सही है, वो भी सही है। बताना ही नहीं चाहिए ना मेरा एनालिसिस किसी को, एक्चुअली। हाँ, तो ये लाइव स्ट्रीम भी बंद कर देना चाहिए। लाइव स्ट्रीम में भी कुछ नहीं दिखाना चाहिए, बहुत ज्यादा दिखा रहा हो। चलिए आज से बंद। ये वीक से लाइव स्ट्रीम बंद, चलो। हाँ, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। Just waiting for the market to turn. पहले चालू तो होने दो, चालू हो नहीं रहा है। मेरा भी तो पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और आई एम लेटिंग द मार्केट
get on my nerves. Why? क्या बात बात है, क्या लॉजिक दे रहे हैं सब, एक के बाद एक मास्टर्स ऑफ द मार्केट. Ooh la la, ooh la la. Let's start looking at all. Okay, now you are anyway. There is no value to you. Adani Ports, Apollo Hospital. Okay, you are done. Okay, Asian Paint, you are done. Axis Bank, you are done. Bajaj Finserv, you have one more rally left. Bajaj Auto, you are done. Okay. Bajaj Finance, you are done. Bharti Airtel, you are done. BPCL, you could be done. Britannia, you are done. Cipla, बचा कौन सा है? Cipla, you are done. Coal India, you are done completely. Davies Lab, you are done. Dr. Reddy, you are done. Kranti Subhash, I am planning to do a stochastic webinar full day sometime end of August. I'll announce it in 1 or 2 days. But when I announce it, now that will be a paid webinar. I'll do it only end of August. If you want to register as soon as I announce, because I will be taking only 30 participants. So if you want to, चलो अब ऊपर से देखते हैं निफ्टी 50 के सारे स्क्रिप्ट. इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं. कितने हैं ऑल टाइम हाई पे, ये भी नहीं है. यू आर डन. Asian Paint, you are done. Your correction seems to be over. Axis Bank, you are done. Bajaj Finserv, you have one more rally left. Bajaj Finserv 1. This is done. Bajaj Auto is done. Clear. Bajaj Finance. हेलो. हाँ बोलो. मैं घर पे हूँ, पटकार चेक हो गया ना बराबर. अंदर पानी वानी कुछ नहीं पक्का, क्योंकि अपना बाहर ही खड़ा रहता है इसलिए बोल रहा हूँ. नहीं यार, कहाँ से था प्रॉब्लम, कहाँ था? डोर से क्या हुआ? गैस्केट विस्केट कुछ बदला? बात करवा दो. हाँ अच्छा. अच्छा ओके.
हाँ. ओ, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, भेज देना. Okay, now this is Budge Finance. You have already put in the top. Bharti Airtel, you are very close to the top. BPCL, you are anyway turned down. Britannia is done. Cipla is almost done. Coal India, Khatam. Divi's Lab, Khatam. डॉक्टर रेड्डी खत्म. आयशर मोटर, और ये तो जमाना हो गया. ये तो खत्म ही हो गया. ग्रासिम, you still have one more rally left. Okay. HDFC, yeah, this is done. HDFC Life, okay, should be done today, but you're nowhere near the high. एक भी near high पे नहीं है क्या? Hero Moto, okay. Hindalco, you are also done. Lever, Khatam. ICICI Bank, you are the one irritating, okay. You still have some juice left. IndusInd Bank, you are done. Infi तो खत्म. अरे ये क्या कर रहा है आज? Okay. ITC, you are done. JSW Steel. Oh, you are at all-time high. क्या बात है? Oh, you are done. Kotak Bank. LT. Maruti. हेलो. हाँ भाई जी. हाँ. ठीक है, कल एक ही दिन ना. ठीक है, ठीक ठीक है. हाँ. You are done. Nestle खत्म. NTPC. Yep. Daily chart is. Where are you? Here. Oh, lovely. Okay. ONGC. Okay. Power Grid. Ooh la la. You are done. Reliance के तो देखा हुआ ही है, तो मुश्किल है और जाना. SBI Life. Okay. That SBI Life weightage क्या है? SBI, you still have some juice left. Sun Pharma. This is here now only 11:55.
This was at 11:30. 10:30 top, 10:30, 10:25 top, 11:05 bottom. Should be a high here. Let's see if it will drop down from here. ड्रॉप किया, शायद ड्रॉप डाउन होगा, बराबर ही है, वही तो चल रहा है. इसके बाद नेक्स्ट टाइम फ्रेम आएगा 1:05. लेट्स होप दिस वर्क्स. 1:05 पे. Yeah, this is 1:05. Yes. This is at 1:05. Let's see. It's not been doing much here. It is just oscillating again between 20-30 points. Sun Pharma, Tata Consumer. No, you have upswing left. Tata Motors, you are anyway done. Tata Motors is done. Tata Steel 135. Katam 116. Class head and shoulder. Yep, perfect. Inverted नहीं जमा ना, हो गया ना तो रोक दिया. TCS. Oh. Titan, you have put in the top. Ultra Semco, finished. UPL, or will you break this? Looks like 1, 2, 3, 4, 5. ये तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ तक आएगा तो 60 to 70. विप्रो बहुत दूर है दिल्ली. अरे बाप रे, बहुत दूर है. Let's see. Let's see. Yeah. UPL, if it breaks that shelf of support, it is gone. And looks like it will break. देखते हैं. 20 पॉइंट के ऊपर क्यों खड़ा है तू? ब्रेकआउट है तो ले जाना. Most of the stocks seem to be done with their up moves. There are just 2 or 3 left among the Nifty 50. Still have some minor up move left. Last 1 or 2 days. So, ideally speaking, market can correct those 1 or 2, will keep, like how TCS has gone up 100 rupees today. Yes, sir. Yes, sir.
मेरा पैसा, मेरा ट्वीट, मेरा व्यू, मेरी मर्जी। पसंद नहीं है तो अनफॉलो कर। काय को टाइम पास करता है? तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? आए वापस लेकर आके 500 के नीचे खड़ा कर दिया तो शाम को हो गया डन 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 डन। ब्रेकआउट 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 करते रहना। हाय 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 हाय। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। Bandi Srinivas is after me. I don't know. He has blocked me. I have absolutely no idea. See, anyone wants to have a discussion on the subject with me, I am more than open on the subject. But it never remains with the subject. It starts getting personal attack.
That's how it is. No, it is always like that, Mihir Rathod. It is always like that. Market will always tempt you with one kind of action and suddenly changes that. Why you haven't seen? देख लो, इधर देखो क्या हुआ. नीचे नीचे नीचे, रोज ऊपर आके क्लोज किया, ऊपर आके क्लोज किया, ऊपर आके क्लोज किया, फिर इधर नीचे नीचे किया, फिर इधर टेम्प्ट किया, फिर फाइनली इधर ऊपर आके एक नेक्स्ट डे वही सब यही एक्सपेक्ट करते हैं, आज भी नीचे ही रहेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रैप दैट इट लेज. पहले यहाँ पे पूरा नीचे 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 जब भी आया, सो यू पीपल हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट. अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है. ये टाइम जोन जब ये आता है, yesterday explained how the time zone came, 54 वाला cycle. So this is the area. So you are not, when you talk of a time zone, you are not looking at the exact point. It is not a line in stone. This is like seasons. Rainy season इधर season इधर बदलेगा, तो वो बदल रहा है, and suddenly it changes. And एक बार change किया ना, this is the kind of action you are looking for when there is a breakout. You don't look for action like what it is doing today. So it is always like that. यहाँ पे भी क्या किया, अगर समझोगे तो यहाँ पे भी क्या किया, ऊपर 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 ऊपर, सडनली डाउन डाउन डाउन, बिकॉज पीपल वर गेटिंग, नीचे आते बाय करूंगा, नीचे आते बाय करूंगा, नीचे आते बाय करूंगा. सो बाय ऑन डिप चल रहा था, इधर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे किया. इधर क्या किया आज, अभी शाम तक देखते हैं क्या करेगा. सडनली वन फाइन डे इट विल ओपन एंड देन एवरीवन विल से अरे ये होगा, वही होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. उस दिन चेंज ऑफ कैरेक्टर. And we have been going higher and higher and higher for 108 days. I showed yesterday 108 days, 54 ka double, mota moti. Okay. So now if you calculate, now where the point here is, do I calculate it from here or do I calculate it from there? So somewhere आजू बाजू में आ जाएगा वो खट करके गिरना चालू होगा. So this, it has done its value. So now, irrespective of that, whatever, there will be a minor change definitely. So there are a lot of things which are working in favor of the shorts right now. अभी लग नहीं रहा है because it has not turned yet. The minute it turns, you will see, अरे ये क्या हो गया? That is the... So, अरे कोई बिग शॉट नहीं होता है ट्रेडिंग में. यू आर एज गुड एज योर लास्ट ट्रेड, दैट्स इट. Even the great George Soros has had many losses. Even the great Warren Buffett has many losses. There's no big shots. There is no... Everyone thinks they are very important. There's nobody important. Market doesn't even care about any of these guys. Who are they? They may have made some money. 1 करोड़ 2 करोड़ बोला, मैं भी बनाया था, 900 करोड़ बनाया था. फायदा क्या है? Does it finished? If you have done, you have done. Gone. Finished. That's it. Finished. What is there to boast about it? और मुकेश अंबानी रोज बोलेगा मेरा तो ये बड़ा कंपनी है. How stupid it looks if Mukesh Ambani starts saying that every day. वो ट्विटर पे ना, the only guy who wants to show off is the guy who doesn't have recognition. That's it. You have to understand that. Anyone who starts talking big, मतलब यार तेरे को कोई पहचान नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप चिल्ला रहे हो अपने आप. बाकी बकवास है. क्या फर्क पड़ रहा है? No, all Sarita
I can't read this. Sarita, okay, I am unable to see because this screen is looking too bright. Those are all very deep things which I need to, which is given only to the elite wave mentoring students. Don't ask those details, please. बहुत लोग हैं. If you actually check my Twitter account, the number of accounts that I have blocked are much bigger. डार्क लॉर्ड्स, डोरेमोन, सुपर चैट तो छोड़ो, इधर लाइक भी नहीं देता है लोग. लाइक का तो पैसा भी नहीं लगता है. About the stochastic webinar, I will be doing a stochastic webinar sometime by end of August. That's what I'm thinking. And but anyway, I take only 30 students in a batch. So when I do that, if you want to attend, there is no compulsion as such. If you want to attend, you can, because there have been quite a few requests. Will do, because there is a lot more to the market than just or the indicators. Look at this here. From here, many times you could have got the view. अभी मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचना भी छोड़ दिया. अब भी ट्विटर पे कोई है. क्या झाला? Locked. ब्लॉक. इमोशनल सपोर्ट देने बैठा है क्या तेरे को?
अरे मेरे को नौकरी नहीं चाहिए. Come on, give up. What are you waiting for? There are too many people. No, I don't use RSI. There's no difference between RSI and stochastic. RSI calculates based on the number of closes. Stochastic calculates based on the distance of the closes from in the last 4 periods. Practically, there is no difference between the two. Sarita, you can read Murphy's book, Technical Analysis of Financial Markets. That's the first book to read, or rather, it is the textbook to read to understand technicals. That's the only book I suggest. Technical Analysis of Financial Markets by John Murphy. अगर वो बुक बराबर पढ़ लिए तो उसके बाद में किसी का हेल्प आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. स्टोकेस्टिक जो है लास्ट 14 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो लेके अभी का क्लोज उससे कंपेयर करता है. RSI लास्ट 14 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो नंबर ऑफ हाइस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ हाई क्लोजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लो क्लोजेस लेके कैलकुलेट होता है. तो बेसिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है. Absolutely no difference. So all the indicators which are used, they are all based on only one thing: where is the close in relation to the earlier periods. Even your moving average, what you are doing, you are taking the average of certain number of periods, average closes, or mostly it is closes, and you are tracking. If you are doing, you are using एक्सपोनेंशियल किया तो लास्ट इतने पीरियड को ज़्यादा वेट दूंगा, ये पीरियड को ज़्यादा वेट दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो मैजिक साइंस देयर. सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट एवरी बार का क्लोज इज इन रिलेशन टू लास्ट उतने नंबर ऑफ बार्स का क्लोज किधर है उसका ही कंपैरिजन कर रहा है. और कोई कंपैरिजन है नहीं मार्केट में करने के लिए. और उसी को इधर से उधर उधर से इधर घुमा घुमा के 50,000 इंडिकेटर बना दिए. द होल बेसिस ऑफ इट इज द क्लोज इन रिलेशन टू द ओपन हाई लो और द क्लोज इन रिलेशन टू प्रीवियस पीरियड्स. दैट्स इट. सो यू अंडरस्टैंड दैट द बेस थियरी इज एवरी बार का टाइम पीरियड में द क्लोज रिप्रेजेंट्स द नेट एक्शन ऑफ दैट पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस 5-minute पीरियड, this close was higher, this close was balanced, this close is higher towards the high of that bar, this is towards the high of that bar, this is towards the low of that bar. So there was some selling here, but then the next bar all that selling was digested and it took up. Because this went up, next bar also you expect it to up. Next bar there was a balance. Next bar it went higher. Next bar it went and close towards the high. So you expect it to be higher. The next bar to be higher. So the next bar went high. Now here it was a very small bar. So the buyers here exhausted. Now the seller came in and he started selling. So you have a close towards the low. Next day next bar you had a close towards the low. So net action of this bar and this bar, if you see, there is a balance between these three bars. And then again there was an attempt to take it higher.
again there was a attempt to. So if you see the open and this close here, there is a balance here. Now based on this balance, you will say, okay, the balance is found here. Now the market will find very great difficulty in going up. So what has happened after that? Market has been trying to go up, it is not coming down. So if you take from this bar, which was the last real bar, where it had a high close, and compare the closes here, they are so close. Most of the closes are close towards this here. So the net action of this entire thing, there is a balance between the buyers and sellers, which is why the market is going sideways. So even before anybody tells you whether the market is going sideways, if you know how to study these bars, you will know where the market will start going sideways. You don't even need these time zones. You don't need anything. Everything is based on the close only. So now what? There is this balance between the buyers and the sellers in this zone. So then we call, अगर इसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट है. अरे क्या ब्रेकआउट है? अगर इसके ऊपर जाता है, इट मीन्स दैट द बायर्स हैव टेकन ओवर एंड दे विल पुश द प्राइसेस हायर. ये बैलेंस जोन के नीचे जाता है, तो it means that the sellers have taken over control of this one and they can push. So as long as it keeps doing lower lows from here, as long as it keeps lower lows and keeps the closes coming towards the low, you know the sellers are taking control. Right now there's a perfect balance setup. You measure with this bar. इस बार के ओपन से ये देखो, अगर आप ड्रॉ करोगे, ये पेंडुलम जैसे ऊपर नीचे हो रहा है. सेलिंग भी आ रहा है, बाइंग भी आ रहा है, चल रहा है. So somewhere there will be a decision to be taken and one of them will give up. Now, this we are doing in a 5-minute chart. Now, if you apply the same principle on a daily chart, you will find that you will be able to understand and apply it over. अगर 15-20 दिन आपका एक ट्रेंड पकड़ लिया, तो वो 15-20 दिन में आप बहुत पैसा बनाते हो. So here the difference is the balance है, तो कहाँ जाएगा? अभी तो ऊपर नीचे चल रहा है. So they have to push it down. Once the sellers push it down, then the sellers have taken control. The buyers have exhausted here. So here the buyers are still buying, but there are very few people buying, putting a higher price. They have only the maximum bid price they have been able to put is 565, 570, which is why you have that top. उसके ऊपर buy करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, और इस लो के नीचे सेल करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया. तो इस लो के नीचे सेल करने के लिए एक भी दो भी आ जाते हैं, तो they will start, then there can be. So this is how you start studying the chart right from the beginning, from the very basic. No, it is not fair value. There is no fair value for the market. This is the average price that they are willing to give right now for all buys and sells, plus or minus a little. Ab, where will the mood turn and somebody will say, now when there are nobody who's right now willing to give more than 564 to buy the market, to buy the Nifty. So when they start, एक किसी को डर लगेगा, यार 564 के ऊपर नहीं जा रहा है, मैं बेच देता हूँ, तो फिर वो नीचे जाके दूसरों को डर लगेगा, यार ये और नीचे जा सकता है. That is when they start selling. So the last buyer will, when the last buyer is finished, market will stop. इधर आके कोई तीसवा खां सेलर नहीं मिलता है कि ये टॉप है, इधर बेचूंगा. It is just a fluke. This is how you read the one. Where is the buyer buying? When is the buying exhausted? When is it? And that can be clearly seen. अब ये सब देखना मुश्किल है, तो ये indicator बनाया which will tell you exactly what is happening. So now because this balance has been maintained, so right now if you see here, it is not possible. If you take the last 14 periods, you will see that the market is towards the close. This close came towards the end, which is why the stochastic has reached zero.
So this stochastic is nothing great. It is only showing you what the close, where the close is in relation to the last 14 bars. That is all that is there. RSI भी लगा लो वही दिखाएगा. Number of, see, the number of buys and the number of higher closes and the number of lower closes are balanced, which is why it is at 50. इसका सेटिंग क्या है? 14 होना चाहिए. इसका सेटिंग 14 ही है. 14 है ना? हाँ, 14 है. So in the last 14 periods, this is a green close right now, which is why it is going up. Here it was a perfect balance between the two. Here in the last 14 periods, 55% of the closes were higher, 55% were lower. 45% were lower, which is why it is at 55. So it is just a percentage of how much percentage of bars has a higher close, how much percentage of bars has a lower close. इसको बहुत बड़ा वैल्यू देखे, RSI 70 के ऊपर आ गया, ये ओवरबॉट है. That is not the way to look at it. There are other things to look at it. There are some things called shoulders. There's other things here. There are trend lines formed in the RSI. Those are the ones to look at. And everybody keeps it at 30 and 70, which is a wrong way to keep. Not only that, when the market is going up, this band has to be shifted up. And when the market is coming down, this band has to be shifted down. So there's a whole lot of things here to study deeper within the RSI. Right now, it is giving that there is a perfect balance. This is what we are seeing. You don't need the RSI to tell that. By just looking at the chart, you can say where is the balance or where it is shifting. Just by looking at the number of green bars, you can say number of green bars है तो RSI ऊपर ही जाएगा. But it's just, so आप RSI लगा लो, आप ये लगा लो, सब लोग अपना अपना स्पेशल लगाते हैं. This doesn't make any, it doesn't give you any great edge. The best thing is to read the bars. What gives you an edge is the pattern. Why? After such and such a pattern, only this thing will happen. Why does this thing happen? I have explained that also in a previous live stream. Just go and watch. It will be there. Why do these patterns form? So the balance shifts. Similarly, if you go to the daily chart, it's at the top. No, here. It's at the top. It's at the top. So somewhere the balance will shift. And when the balance shifts, this will start moving to the downside. This starts moving to the downside means what? Means the closes will come towards the lows. The closes will come towards the lows means what? The market will start closing lower and lower and lower, lower and lower every day. So this is the way you make an assumption. होता कुछ है नहीं, स्पेशल कुछ है नहीं इधर. There is no magic here. Lot of people will sell you secret strategies, secret, my secret, that secret. इधर कोई मैजिक नहीं है. सब एक ही चीज देख सकते और वो सबको दिखता है. क्लोज किधर है बस आपको बोलेंगे जरूर. You don't change it as per your comfort, Gaurav Sharma. It is the periodicity. If you get the exact periodicity of stochastic or RSI, you will see that ये नीचे से ऊपर आते ही मार्केट टॉप लगाएगा और वहां से घूमेगा. ये सब स्टोकेस्टिक वेबिनार में दिखाता हो. व्हाट इज द एग्जैक्ट व्हेन, व्हाई दिस इज सो, why it has, so that is when you will learn
Once you learn what is the periodicity you want to put, then you will really learn that ये exactly उसी time पे घूमेगा. ये देखो एक एग्जाम्पल लगा था. नाउ द periodicity has to be changed every time. Don't start putting it and thinking it is Ramban. There is a way to calculate the periodicity. Now when I do the periodicity, now you see लो पे चेंज हुआ, ये इधर लो पे चेंज हुआ, ये ऊपर आया तो मार्केट भी ऊपर आया, ये इधर से नीचे आया तो मार्केट भी नीचे आया, ये इधर से ऊपर आया मार्केट भी ऊपर आया, इधर आया यहाँ पे ये डाइवर्जेंस बना तो ये इधर लो बन के ऊपर निकला. You need the exact periodicity. At this point when it is at the lowest, market is at the lowest. When it is at the highest, market is at the highest. Here it is giving you this divergence. So you have to know how to calculate the periodicity. Based on the periodicity, you can get the exact top. ये देखो इसका periodicity मैंने अभी set किया to 75, but that is not 75 is not constant. So here is the low, here is the high, here is the low, here is the high. So it will work perfectly. Here there is a divergence inside. Here the market is going low. This is based on all of this. You can do a whole lot of that. It's a different study altogether. So you need to go deeper into it. That's all. The standard one जो ये लगा के देता है वो 14 है. तब सबको सीक्रेट्स और सीक्रेट नहीं स्टडी नहीं समझ में आता है तो बताते नहीं है कोई हाउ टू फाइंड द पीरियोडिसिटी. सो दोज आर द एक्चुअल थिंग्स यू नीड टू रिसर्च एंड फाइंड आउट. Come to the stochastic workshop, I teach you there. But there's a paid ones. There's no magic here. It is all clear right in front of you. Welcome, Sarita, anytime. The only thing I ask is, I am sure there are quite a few trainers also who are watching the live stream, or they come in the later in the evening and watch the whole live stream, pick up some points from here, and then they will start teaching as their own ज्ञान. वो इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अब ये सोचो ये ज्ञान फ्री में दे रहा हो तो एक्चुअल पेड वर्कशॉप में क्या होता है. There is no book for stochastic as such which has all of that. Nobody will put all this into the books and give it to you. और YouTube वीडियो में तो कभी मिलेगा नहीं.
You can read. I consider that book bakwas because Proctor has added his own masala in there. वही तो प्रॉब्लम है ना, रट्टा मारने की आदत पड़ी है सबको, दिमाग कोई लगाता नहीं है। और ये मार्केट है, आप दिमाग नहीं लगाओगे, रट्टा मारोगे तो रट्टा दिखाता है, एक दो बार प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद में ऐसा ले जाता है, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। ये कल जब मार्केट खुला था, S&P 500, it opened, this was the daily chart, S&P 500, मैंने ये लाइन लगा के बैठा था, ठीक है, एंडिंग डायगोनल है तो निफ्टी के साथ में मैच कर रहा है, इधर भी इधर है तो, एंड इट हैड ऑलरेडी पुट इन अ टॉप इन जनवरी 2022. Okay, where Nifty put in a top in September, October 2022. October mein when Dow was down, Dow was going up, Nifty was coming down. Okay, and then when Nifty was going up, Dow was coming down. Now so there is a slight difference. Also, there is a synchronization in the pattern also. So you have to understand where these patterns are synchronizing, where they are changing. So abhi what is the expectation? Because of this same pattern like Nifty ऊपर गया है, नीचे आएगा, पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, इसका डेज का इसका टाइम जब भी आएगा तभी आएगा, जिस दिन आएगा. सो इफ यू सी द आवरली चार्ट, दिस इज द वन. No, stochastic webinar is only stochastic webinar. There is no timing in the stochastic webinar. Timing goes into the timing workshop. See, again we have come and maintained the balance. So, what is the stochastic doing? It's coming up. What actually is it? What actually is the market doing? You get an idea. Slowly the sellers have increased their pressure. करने दो.
हाँ, बहुत लोग ये भी सोचते हैं इधर सेलर आके एकदम बेच देगा, नहीं बेचेगा, उसको भी डर लगता है। वो भी तो धीरे धीरे थोड़ा बेच के थोड़ा बेच के थोड़ा बेच के देखता है। उसके साथ में रिटेल भी थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, वो उसका भी आता है। सो स्लोली इट स्टार्ट्स। It was always, market turns are very slow, always. Rarely they are like a big down. That only happens if the market is completely skewed in one side direction, which right now it is not, because there are a few sellers also. There are a few people who are clamoring for market बहुत overweight है, overweight है, overweight है। ऐसा भी नीचे आता है, ऐसा नहीं कि ऐसा मार्केट नीचे नहीं आता है। बट if you go back and see here, if you go to the daily chart, it's not that it came down fat immediately. वो 1 2 3 4 5 दिन धीरे आया, 2 दिन ऊपर गया, उसके बाद में प्रेशर आया। The only difference between that and this is it did not just test this high, but truly speaking, if you see, it has not been much, it has just been a little lower. It has not done that here. Now same exact action करता तो सब लोग टूट पड़ते उसके ऊपर, इसीलिए सेम एग्जैक्ट एक्शन नहीं होता है। So what people expect is exact action. So as an analyst, what would I say? Something similar will come, but will it be the exact same? No. Now what has happened in the last 3-4 days? We had the red bars. Has it not opened higher here? Go deeper into the chart and see. इधर नीचे आया, ऊपर आया, इधर से इधर, ये क्लोज हुआ था किधर? 264 पे। नेक्स्ट डे ओपन किधर हुआ? 384 पे। 120 पॉइंट ऊपर खुला था, फिर धीरे से सेलिंग आया, फिर इधर उस नेक्स्ट डे इट वेंट, व्हाट वाज दिस क्लोज? दिस क्लोज वाज 177 एंड व्हाट इज दिस हाई? हाई इज क्लोज टू 330। 170 पॉइंट ऊपर आया, तो इधर आप इधर खड़े होते तो 120 पॉइंट ऊपर है क्लोज से, यू वुड बी सेइंग सर ऊपर गया, सर ऊपर गया, सर ऊपर गया, तो शाम को तो नीचे आ गया। So when you're looking at the past, you have to also see open किधर हुआ, high किधर लगाया, close low किधर आया, close किधर आया. You have to study all of that, and then you will make your decision on what has to be taken. I don't say wait for the first half an hour just like that. It is only after a long study that we come to that. It don't react to the market. Market को जो करना है वो by end of the day तक ही करेगा. जल्दी मत करना, धीरे धीरे कर। तो मेन सेलिंग आता है ऑलमोस्ट 1 week 10 days आफ्टर द टॉप इज फॉर्म। गो बैक इवन इन 2020 सॉरी, क्या हुआ? इधर लगा फ्रॉम दिस लो, फ्रॉम दिस क्लोज हियर 12,111, it went all the way up to 12,275. That's about 100 points. 2 दिन में 100 points खींच के आया. Now if you are standing here, अरे यार ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, why do I have to verify here? You verify it yourself. सीखो, don't depend. My point always is learn, don't depend. डिपेंड करने से फिर वो वही सवाल, फिर 4 दिन बाद में फिर वही, सर मार्केट ऊपर आया अब क्या करूं, will come. Ask some of them. I think Samir will be here. Bhavin has also attended some workshops. Ask them, what do I tell? I will not give you support. You ask me question about the subject. मेरे को ये वेरीफाई करके दो, वो दिखा के दो, इसका काउंट बताओ, बोलोगे मैं जवाब ही नहीं देता हूँ. Ask them, even after them being the student, I say you learn by yourself. Possible, we will see. Let us see.
153 पॉइंट्स अप है निफ्टी देखने के लिए। हाई से कितना दूर है? ऑल टाइम हाई से, आज से पहले वाला। ये हाई कितना था? गलती करो, मार्केट आपको लेसन भी देगा और उसका फीस भी लेगा आपसे। करो, गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक भी होल्ड कर रहा है। वाओ, लो, हाई, हाई। 43 points current price with reference to previous high, previous highest high. अभी तो 12:30 बजे, 2 घंटे में गेम खत्म। 15 पॉइंट है, क्या ब्रेकआउट है ना? शाम तक दिखा देगा ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेकआउट है। बी पेशेंट, डोंट रिएक्ट। ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है, क्या है मालूम पड़ जाएगा। After 10, 11 o'clock, who's winning the game? The stochastic will tell you who's winning the game.
Kamlesh Kapadia, what if there is a circuit down some one day? What will Nifty hit? It is repeating with a difference. तो हो गया ना कमलेश कपाड़िया काय को सवाल पूछते हो Will it come down? I don't know. I am only watching. आने वाला तो है जब ये घूमेगा आने वाला तो है दैट फोरकास्ट आई विल मेक
It may not come tomorrow, day after, but whenever this turns, whenever this turn turns, सर्किट तो आएगा. 12 ट्रेडिंग सेशन है, 12 ट्रेडिंग सेशन में आएगा, आ सकता है. $19,000 जुलाई एंड होल्ड करना, आई डाउट. कैन इट होल्ड? इट कैन होल्ड, बट आई डाउट. मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर दर्शन तो घन श्याम नाथ मारे, अखिया प्यासी रे. That I'll give you a guarantee. आएगा तो सही दिसंबर से पहले एक बार. मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की. Whenever you see ending diagonals, always be ready for circuits.
लगा दिए गाड़ी, हैप्पी हो ना? हर बार जो आते हो क्या? हाँ तो लगा दो, ऊपर चाबी दे दो। हाँ, बिल्कुल।
बना करके कुछ भी नहीं। कॉफी बना के लेकर आया था, अभी तक कुछ भी नहीं किया, अब 5 पॉइंट भी नहीं हिला। क्या कर रहा है? It's become a boring. एक्सपायरी सेशन है, 19300 से 19500 खींच के लाया, 19500 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है. So somewhere around 19500 only the close should come today. That's just an assumption. अब पूरा दिन कुछ ने बोर करने वाला है. खाया पिया कुछ नहीं, पूरा हफ्ता भर यही टाइम पास करवा लिया. ऐसे गलत फहमी में मत रहना, इधर किसी को भी कुछ नहीं आता है, मेरे को भी कुछ नहीं आता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आज क्या दिखाने वाला है किसी को नहीं पता. वी मेक एन assumption, we work to see if that thing is happening according to the assumption. इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट की बोला था, यू आर एज गुड एज योर लास्ट ट्रेड, दैट इज इट. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. ऑडियो में कोई इशू नहीं है बॉस, आप अपना ऑडियो चेंज कर लो. एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली. कितना दिन हुआ प्लेटफॉर्म स्टेबल होके?
दर्शन तो आ सकता है, आ सकता है. गुड गुड, बाय बाय, बाय करो, बाय करो. सुबह जब ये इधर भाग रहा था तब भी मैं टेंशन में नहीं था. तो अभी क्या सोचूंगा? सोचने का है ही नहीं. ये देखो, ये अभी तोड़ रहा है लगता है. देखते हैं क्या होता है.
ऐसा ब्रेकआउट थोड़ी होता है 7.5 पॉइंट पीछे. फॉल्स ब्रेकआउट ही है आज. आ गए वो हाई के नीचे, नहीं आया 1 पॉइंट. कहा हुआ ब्रेकआउट. Something is seriously wrong here. Oh goodness. चला जाना चाहिए 451 तक. और एक डोजी और एक क्लोज विद इन द बैंड, क्लोज एट द लोज.
ज्योति जगा दो मन मंदिर की ज्योति जगा दो. आपको ये 50-60 पॉइंट वाले ट्रेड चाहिए क्या? 50-60 पॉइंट वाले ट्रेड पब्लिक बहुत देता है भाई. उसके लिए मेरा मेरा जरूरत है नहीं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल गिव यू दिस 50 पॉइंट 60 पॉइंट ट्रेड्स which don't have any meaning, which you need to be so rapid in execution. I am least interested in this 50 point bank nifty and 20 point nifty trades. अपने को ट्रेड किया तो 500 पॉइंट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट बताओ. ये 50 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट क्या होता है? ये 30 पॉइंट नॉट इवन 1%. टाइम पास के लिए कोई ट्रेड करता है क्या? दैट इज वाई यू डोंट टेक इट सीरियसली. यू डोंट डू टाइम पास फॉर ट्रेडिंग फॉर टाइम पास. ट्रीट इट as one of the most serious things you will do in life. You will not do, इसके साथ में बचपना नहीं करोगे. आगेंगे सपोर्ट करने आएंगे, उससे अपने को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अपने को चाहिए 15,200. उस बीच में
कम से कम 200-300 पॉइंट देने के बाद में निफ्टी में कोई चेंज आता है क्या ट्रेंड में, देखो तो वहां कवर करेंगे। नहीं तो ये 15-20 पॉइंट, 10 पॉइंट 20 पॉइंट में सोचना ही नहीं है। Our speciality will be making big numbers with very few trades. मेरे एक टीचर थे व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, he used to say the most serious things in life have to be taken seriously. If you bring a easy approach, हाँ चलता है, टाइम पास है, देखते हैं, if you bring this kind of an approach, it is called a lackadaisical approach. If you take this casual approach, then everything in your life will become casual. Decide for yourself whether you want a casual life or you want a fantastic, professional, lovely life. Whatever approach you have towards one thing, you will have the same approach everywhere. That is why you will see people go on a holiday but they are stuck on work. They are working but they are not working. When you go on a holiday, you have a holiday dil khol ke. When you are working, you work with 100% devotion. When you are trading, you do trading with 100%. No चलता है, टाइम पास के लिए करता हो, ये सब नहीं होता. You will only make the broker rich here. एंड यही अप्रोच लाइफ में भी आ जाता है. तो इसीलिए टाइम पास वाला ट्रेड नहीं करने का. इफ इट मीट्स द रूल्स, टेक द ट्रेड. एकदम टाइम पास वाला ट्रेड, फिर उसके लिए एक साइड में कुछ पैसा रख लो कि ये इतना पैसा मैं टाइम पास वाले ट्रेड में ही करूंगा. डोंट मिक्स बोथ ऑफ दैट विथ your professional one. But then actually time pass wala trade you should not do. Is fight going on around previous high. Don't know who will win.
Nifty is the most difficult instrument to trade in the world. Both Nifty and Bank Nifty, not just Nifty and Bank Nifty, all Indian stocks are the most difficult to trade in the world. They form the most complex, difficult to understand patterns. Why? Because there are too many analysts here and very few people trade from the heart. Internationally, the number of analysts is less. Okay. क्रांति सुभाष, इंडिया में पैसा नहीं है, ज्ञान बांटने को सबको आता है. वहां पे पैसा है, इतना ज्यादा ज्ञान पे ध्यान नहीं देते. तो इधर हर आदमी एनालिस्ट, हर आदमी एक्सपर्ट, हर चीज का कुछ ना कुछ ओपिनियन होता ही है. देयर दे डो इफ दे डोंट नो दे से आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव एन आंसर टू दिस.
That is why when you see there in Europe and US, if somebody is an expert on something, he's really an expert because he studies it deep, he goes deeper. और जिसको नहीं करना है वो बहुत सिंपल लाइफ जीता है. अपने यहाँ ऐसा नहीं है. For everything we want to go get into, we are jacks of all trades but masters of none. Oh no. Really? Oh wow. That is interesting. Keep a watch on 44,400, not today, later. 44,400 on Bank Nifty. जब 44,400 टूटेगा, Bank Nifty will collapse completely. Not very far. So the decline is not very far. No, Kranti Subhash, it doesn't work that way. When we talk of patterns, when we talk of closing, when we talk of technical analysis, it is a natural phenomena. It is not something which is exclusive to one country or one place. Sitting here when I can forecast what is happening on the Dow and the including Nifty, it is not got anything to do with it'll work only in their country or to influence the masses. No, there is no such thing as influence of masses.
Again, I hope now you people understand what I meant by don't react in the morning. Market has been giving very good lessons for last 4 days. Don't react first thing in the morning. Today's open is at 468. I have no idea, Sandeep Agarwal. I have asked this question many times on social media. When I can see it, I'm sure you also can see it. Everybody can see it. All the technical analysts, anybody who studied the book can see it. So I have asked this question many times. Is this a intentional misleading of public, or are you guys don't even want to tell the truth because you want to take the trades? So I really don't know what is the reason. I have asked this question. Why do you want to give false misleading forecasts? People talking on the media only bullishness I can understand, but on social media at least I thought people will be open and honestly tell what is it that they think.
but pata nahi, maybe I am wrong somewhere, I don't know. आज सुबह भी देखो, I just made one tweet. What a breakout after struggling to break 19,520 for 5 days. Breakout and stalls at 19,560. काबिल तारीफ breakout है. Immediately there's a personal attack. That's what your problem is. Ridiculing your view doesn't, when your view doesn't work. Earlier it was 19,400 as you told in the space, then came to 19,500 and you agreed on Sharad says, and then in another space, nahi tutega. How many times says? Why is there a personal attack? मेरे समझ में नहीं आता है क्यों वेल्थ करते हैं. सब्जेक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करते? Why personal attack? There's something wrong with social media. वाह, ये तो मॉर्निंग का लो से भी नीचे चला गया बैंक निफ्टी. डोजी डेली बैंक निफ्टी ने मजेदार कर दिया पैटर्न फिर. नाइस, दैट्स वेरी नाइस. टाटा मोटर्स, सब ने मेरे को गाली दिया था 2 दिन पहले. अभी देखो इसका, टाटा मोटर्स का भी हो गया स्टोरी, जाएगा नीचे. माय टारगेट तो बहुत दूर है. इफ यू हैव द पेशेंस यू कैन होल्ड. अरे कौन सा ह्यूमिलिएशन यार, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है. I don't know what has happened. Suddenly there is selling. I don't even care about the news. क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं. मैं तो चार्ट देखता हूं. बोलने वाली बात है पवन भाई, आप पकड़े हो तो देखो प्रॉफिट में आएगा, आ भी गया होगा. सारे आएंगे. चार दिन से रोज यही कर रहा है, ऊपर खुल के नीचे, ऊपर खुल के नीचे, ऊपर खुल के नीचे. क्या है? Market is distributing stock to all the people who are still bullish without letting 19,500 be broken. I'm waiting for this to be broken here.
This was the first bearish point where buying came in second time. Hello? टीवी बोल रहे गुड टाइम टू बाय बाय करो बाय करो बाय करो बोलो उनको बाय करो Today, if it closes in the minus, this will be the second time that Nifty has done this. And it will be one of the most dangerous signals. High laga ke minus. My. Put unwind करो, call unwind करो, future unwind करो, ये unwind करो, कुछ भी करो. At least at the end of the day, I am happy. Whoever listened to me in the morning and did not go long, बच गए शायद. Or you can even think of it the other way around. Long गया होता तो पैसा बना लेता मैं. ये बेवकूफ बनाया मेरे को. Both are possible. Depends on how you want to look at it. Wow. Complete doji.
मॉर्निंग में फ्रस्ट्रेट तो कर दिया था ना मेरे को। सर स्टॉप लॉस करूं सर, ये करूं सर, वो करूं। थैंक यू संदीप, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू। कुछ तो होगा इधर, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। Now this movement itself has confirmed whatever my view was is correct. अब कुछ भी कर ले, तेरे को जा नहीं सकता। सी ट्रेंड चेंज हो गया है तो कल का लो तो का मायने ही नहीं रखता है, वो तो ऐसे मक्खन जैसे निकल जाएगा। आज नहीं तो कल मक्खन जैसे निकल जाएगा व्हेन द ट्रेंड has really changed. There is no gap.
Very good, Ishwaraya. I'm happy. आयला 437 भी तोड़ दिया. अच्छा, just traded at 437. Okay. कितना 180 पॉइंट ऊपर लेकर गया था. हाँ, ले जाओ और ले जाओ. कुछ नहीं बचेगा अभी. $19,400 बचेगा शायद. 19,400 बचेगा बिकॉज ऑफ उसको मत भूलना. अगर उसको भूल गए तो कई बार फाट करके थप्पड़ लगाता है. यस टिमय, हमारे लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे हैं सर आपके फ्रेंड को फोन करो, बोलो क्या हुआ. You haven't seen the market? 19,400. अरे लगा के देखना, पागल आदमी. अच्छा किया. 19,440 चल रहा है. अरे निफ्टी, अरे निफ्टी की बात किया था अपन ने सुबह. Why are you talking now of निफ्टी आईटी? हाँ. बोला मैं तेरे को. आज का हाई कितने बजे है? $10.28 को हाई लगाया. बोला बोला नहीं सुना. अरे अरे सच में चद्दर ओढ़ के 3-6 महीना चला जा मार्केट बेच के. 1500 के नीचे दिखाऊंगा. अरे why are you what bothered about that? When I'm calling intraday, this will be the top. बाद में देखते हैं, शाम 1 घंटे बाद में फोन करना. तो बस there was some confidence I had that what the market will do. Don't test me on my pattern readings. Don't doubt my pattern readings. Market में no, it is not a tension तो हो रहा था ना.
अगर पहले से फॉलो करते हैं तो नहीं होता। 16,800 पे लॉन्ग किए होते हैं तो 19,200 तक होल्ड करते हैं तो कोई पैनिक नहीं होता 200 पॉइंट में। पकड़ के बैठो शांति से, कुछ नहीं होगा। ये वापस सी, अभी वीकली क्लोजिंग है ना, कैन कम अप टू 19,500। हाँ हाँ, 19,500 अगेन, okay, and then come down. But there is absolutely no cause for even doubting what is going to happen. This market is going to collapse. And Bank Nifty 44,400 के नीचे दिखे ना आज के बाद, जितना भी चांस मिले ठोकते जाना, बेचते जाना, बेचते जाना। कॉल नहीं बेचना है, फ्यूचर बेचना है या पुट खरीदना है। बेटर फ्यूचर बेचना है। कॉल बेच के पुट खरीदना नहीं, ये भी नहीं करना है। नेवर राइट एन ऑप्शन, नेवर राइट एन ऑप्शन, नेवर एवर राइट एन ऑप्शन, नेवर एवर राइट एन ऑप्शन। यू कैन ओनली बाय एन ऑप्शन, नो राइटिंग। राइटिंग करना हो तो जाओ भाई किसी और के पास जाओ, अपन हेल्प नहीं कर सकता है। Selling a future and selling a call is not the same. अरे भाई ऐसा नहीं है। तेरा ऑप्शन का जो टाइम जो डिके जो होता है ना, it works against you. If you are selling also it works against you. वो मत पूछना मेरे को हाउ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। राइटर बनना, ऑप्शन राइटर बनना हो तो अपने पास एंट्री नहीं है। सिंपल, फ्यूचर बेचो और हेज चाहिए कॉल खरीदो। राइटर कभी मत बनना। राइटर कभी मत बन। राइटिंग kills you. Why does anyone want to write when you have unlimited downside and very limited upside? It just doesn't make sense. हाँ, ठीक है, अपन फ्राइडे बात करते, कल आ जाना, सेशन है ना कल। भाई वेगस, अरे अपना वर्सोवा। हाँ, 7-1 बजे मिले क्या? ड्रॉप इन ना तो लेट चलता है ना उधर, तो उतना देर टाइम तक क्या बजा करोगे। एनीवे, आ जाओ बात करते हैं। डोंट, दिस इज एनीवे गोइंग डाउन। देखो 480 तक आके फिर वापस मारा। And bear market में there's one more characteristic you have to understand. The rallies will be super sharp. कल समझते, कल बोलता हूँ डिटेल में। चलो।
Explain what? Sorry. ये देखो, back to the concept I talked. Close किधर आएगा? More or less. That is the most important point you have to see. Option selling is the worst action you can do in the market. ऑप्शन सेल करने से क्या मिलता है आपको? प्रीमियम. और अगर आपका ऑप्शन सेलिंग गलत हो गया तो क्या होता है? कितना लॉस होता है? So who is the idiot who will take limited profit for unlimited loss? When we are talking about risk to reward, where is the logic of selling an option? भाई अभी 2:30 बजे है, 3:30 बजने में बहुत टाइम बाकी है. ठीक है ना? वो किधर क्लोज होता है देखते हैं. पहले इनिशियल एक्सपेक्टेशन था इधर ओपन के पास क्लोज होगा डोजी बनाने के लिए. नाउ दैट इट इज टेस्टिंग दिस लेवल फ्रॉम द बॉटम साइड, वी विल सी वेयर इट विल क्लोज. There's still an hour. The closing will only be decided by the last half an hour's action. So when you're talking about stop loss, risk reward and everything, we are looking for risk to reward of at least 1:4. Even money में पैसा नहीं मिलता है. तो ऑप्शन बेचने से आपके पास अनलिमिटेड लॉस है, लिमिटेड गेन है. तो वो यू बेसिकली यू आर गोइंग दी
wrong, exact opposite of what you're doing. No FIs don't take that risk. You don't think the FIs are fools. If they are selling an option, they already have a counter long position on the buy side. They will buy a future and then sell a higher price call option. सो कॉल ऑप्शन अगर वो गलत भी गया तो जितना भी कॉल ऑप्शन में लॉस है दैट विल बी कवर्ड बाय द लॉन्ग मनी यू मेक इन द फ्यूचर. Let us say market is trading at 90,400, 465. They'll buy a future here and they will sell. Suppose their goal is 19,800. They will sell a 19,800 का call and जितना पैसा मिला उससे जो नीचे का पुट खरीद लेते हैं. सो दे विल बी प्लेइंग ओनली इन दैट डिफरेंस. Most of the people, you don't know how to trade the market with little risk and maximum gain. That is the whole problem. आपको 200 रुपया भी चाहिए निफ्टी से तो you can do it with just a risk of 10 rupees. You should use your intelligence. क्या क्या कर सकते हैं. ऑप्शन सेलिंग करूंगा मैं, 7 लाख ऑप्शन सेलिंग करूंगा, 10 लाख करूंगा. ऑल दैट इज स्टुपिडिटी. The game of combining futures and options is it's much deeper. Study karo. Those big hedge funds don't make money like how Indian traders make. Watch live stream afterwards.
Thank you, Dark Lord. I'm glad I could be of help. अब इसके बाद भी टाइम आ ही नहीं रहा है. अच्छा 480 तक ही किया, 500 एक्सपेक्ट किया था. ओके गुड. 57 पॉइंट भी निकाल दो, क्यों बचा है 57 पॉइंट. आप सबको मयूर भाई को थैंक यू बोलना पड़ेगा. एक्चुअली मयूर भाई ने बोला सर लाइव ट्रेडिंग करो, सर लाइव ट्रेडिंग करो, सर लाइव स्ट्रीम चालू करो. 2 महीना दिमाग खाया. मयूर भाई है नहीं आज. थैंक यू. If you like what you're seeing, please do tell your friends and do share with others. For almost 2 months he was behind me. Live stream चालू करो, live stream चालू करो. Yeah, 437 वापस 437. अरे चलना. This is the key point. 437. निकलो 437. Oh, Chaitanya Shiva, thank you. My children will be very. There's an orphanage I support, so whatever comes here, I even all the YouTube revenue, there is some revenue, hardly anything, but whatever comes, I give it to the orphanage. Thank you very much, Chaitanya. My boys will be very happy. आया दे दे. पहले माइनस. आज कॉल राइटर की ले ली.
आई मीन पुट राइटर की ले ली. उलाला उलाला. अरे कुछ नहीं होता है, डिक्सी विक्सी मत देखना. और डिक्सी को टर्न करके 200 120 होने तक कोई फर्क नहीं पड़ता. डिक्सी इट विल चेंज इन अ सेकेंड एंड दैट विल नॉट बी दी. Wow, 415. Lovely. Lovely. वो 13. चलो 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 और चलो नीचे चलो. पुट राइटर के तो बहुत बुरे हाल होंगे, बहुत बुरे हाल होंगे. सब लोग यही सोचते हैं पुट राइटर निकल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. जब पुट राइटर का लेना हो ना, पहले ऊपर से पुट खरीद लिया होगा. तो कोई ना कोई खरीदा. जब तक वो खत्म, वो बायर क्लोज नहीं करता पोजीशन, सेलर का पोजीशन कहीं ना कहीं खुला ही रहता है. वो रोल होते रहता है बहुत सारे लोगों में. इट विल कीप चेंजिंग हैंड्स बट इट विल स्टिल हैव टू बी देयर. अगर मैंने पुट खरीदा ऊपर में तो राइटर का तो लग गया, बट इट इज नॉट जस्ट वन राइटर. It will keep changing hands. The buyer can be only one. That's how. So many people say, क्या है, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. आप निकल गए स्टॉप लॉस लगा के, दूसरा और एक लेगा, उसके बाद में और एक लेगा, उसके बाद में और एक लेगा. अब रोक लो पैटर्न को.
मार्स का कमाल. अरे बाप रे, 17 अगस्त को ट्रांजिट करेगा. मुश्किल है, 19400 पे आना चाहिए. फिर ये भी दे दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल है. तीन दिन से पूछ रहा हूँ एक ही क्वेश्चन. सुबह लग रहा था ये ऐसा होगा. व्हाट इज द मार्केट टेलिंग यू? सिंपल क्वेश्चन टू आस्क द चार्ट. तो बोलना क्या चाह रहा है? वो है ना, अरे कहना क्या चाहते हो? Low bake 364 today. See, because of the any other day, I would have said yes, possible. But because of the expiry today, the expiry would be around a round number, which would be the option sellers fight. So it is like okay. So because of the expiry today, cannot say, but right now I would still only have hope till 19400. 19400 break करके जाता है तो then you should expect 19300. Now yesterday's close is not very far, 35 points निकाल देगा. लो भी कितना दूर है? Yesterday's low कितना दूर है? Yesterday's low is at 362. Possible, not very far, possible. You are about 50 points away. Yes, very possible. And if the trend has changed as it is looking right now. Hello. Thank you, Apurva Sharma. I am honored. लाइव स्ट्रीमिंग कभी बंद मत करना, साथ में ट्रेड करने में अच्छा लगता है. कोशिश तो करेंगे सर. Definitely, with all your support, if everyone is liking it, I will continue. मेरे को भी मजा आ रहा है, इसीलिए you can see every day सुबह से शाम तक बैठा हो, बक बक चालू है मेरा नॉन स्टॉप. Reliance crossed. Reliance broke 250. Watch out, Reliance is changed its trend. Reliance has changed its trend.
हो गया खत्म. मार्केट फिनिश. यू कैन सी माय टारगेट कमिंग हियर. 19400 आ गया. ये भी जाएगा. सी कुछ कुछ बचे हुए थे, उन सब के खत्म होने के लिए ये मार्केट 2-3 दिन और रुका. 2 दिन 3 दिन, because it was much larger patterns. Now it'll go fast. Sure, thank you. Just inform your friends. Let's have more people, more questions. फिर मजा आएगा. 362 बचा. कितना है? 14 पॉइंट बचा है माइनस में. 15. That's it. बैंक निफ्टी 22 पॉइंट्स. बैंक निफ्टी 44,400 आज भी तोड़ दिया तो बगल वाले का किडनी भी बेच देना. I had actually said this in a Motilal Oswal कॉन्फ्रेंस. अगर निफ्टी ये तोड़ के ऊपर जाता है तो एक काम करना, मोतीलाल टावर भी बेच देना और निफ्टी खरीद लेना. मोतीलाल जी खुद बैठे थे उधर. It was in 2017. 2017 Mobic. मोतीलाल टावर भी बेच देना. रिकॉर्डेड होगा कहीं ना कहीं. तो 3 बजे का कैंडल शुरू नहीं हुआ. $3 कैंडल चालू हुआ क्या? नहीं, 255 ही चालू है. आई हाय.
जाओ आ जाओ. The volume should have been should be huge. Volume has increased. Going 362 भी ले जाएगा. Why? Why? Global indices, nothing is down, only Nifty. That's an interesting thing. Nifty are outperforming global indices. Thank you, Kamlesh ji. India decoupled. डिवोर्स हो गया. What happened? Something happened to the India story. Is it not intact? Let's see. Let the 3 p.m. one go. Future negative. Aye. Possibly. Yesterday's low will also go. Possibly. Then we'll break another 100 points. 19300 भी तोड़ देगा अगर कल का लो गया तो.
वाह, निफ्टी बैंक नेगेटिव. फ्लर्टिंग नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अच्छा, निफ्टी बैंक का कल का लो क्या है भाई? 562 तोड़ देगा. Bank Nifty below 44,400. देखो 3 o'clock आया ना बाइक कुछ तो. That's why you've got to be very careful. आज के बाद में ताकत नहीं रहेगा टू गिव अ गैप अप अगेन.
This should be the end of the session. What will happen if we get a gap down tomorrow? Nothing. कुछ नहीं होगा. हाँ, 19,400 ही क्लोज आना चाहिए. उसके नीचे मुश्किल है. Possibly gap down. Now won't have guts to open higher like this 100 points and all, because 4-5 days they have been hammered. All the bulls have been hammered. See, there's 5 consecutive closes, all at the day's low. Every day whatever has been taken has been absorbed. So there won't be any guts left. Plus we have the trend change date here. So this was an intraday spike again. So यहाँ से तो पूरा complete pattern करने के लिए 54 दिन तो minimum पकड़ो. 54 days minimum. So calculate from this green bar 54 days. 11th July से 54 days. अभी गैप अप चेस कौन करेगा? इसीलिए गैप अप नहीं खुलेगा ना. Now we will have to get a little more careful again tomorrow. Trading the trend change is always difficult. आज दिन का महाडोजी कैंडल अब समझ में आ गया. नाइस, गुड मिहिर. I am glad you people are seeing it. That makes me very happy. So पहले ये सब नहीं देखते थे. ये 5 दिन का डोजी अभी दिखता है clearly. So all this is what the market is telling you. This is the language you have to understand. तब कहाँ के नीचे जाते ही वो तैयार हो जाएगा नीचे. Those are the things you need to think all the time. Why 44 400 is because this trend line connecting this, it is coming here. इसके नीचे जाते ही it becomes weaker. ऐसा सीखे तो मजा आए वे. Paying attention to what is said and how to apply it later. 4 September. सीधा 4 September. Yes, Sarabjit, that is correct. Third, 4th September. So the broader trend should be down. In between एक दो बीच में जैसे उधर रैलीज आए थे 1-2-3 दिन के, वो रैलीज आएंगे छोटे मोटे. Yeah, 400.
वो भी तो लाना पड़ेगा. Possible. Tomorrow we have one more trading session. Then we have what? 14, 15, 16 is a holiday. 17. So basically from 17th on the trend will continue. So should go on for another 7 days. We will see as the pattern unfolds. I'll keep updating every day. Broadly dates are gaye. How the pattern will unfold, we will keep updating. So that we're not caught on the wrong side for a long time. Won't be surprised. There's no upside. There is no upside here. From now on, broadly, the trend should be down till the 4th of September. Why the 4th of September? People have already seen. Okay, these 5-6 bars should be ignored because these 5-6 bars are the expiry bars. So these are just only for adjustment for the expiry. So don't pay attention to this. Look at the close as here, not where this one does. The close should come somewhere right in the middle. 405, 406, 407. Cool. Okay, that went well. Reliance 2744. चलो हो गया. 18,600, yes, that's a first level. Cool. Cool. Okay, almost 21. I think we should call it a close.
We have had enough, and I have spoken. Oh my God. Every day I'm speaking non stop. By the end of it, I feel like going silent for an hour. But yeah, it's nice. Let's call it the end of the session. Have a great evening, everyone. And special thanks to Apurva, Parth, and Chaitanya. Thanks for your contribution. Have a great evening and hope to see you again tomorrow. Do join in if you can. Have a great evening.